Hey all, Ankit Kishore this side for Stierfleet team and I welcome you back to my channel. So again a summary video of this FINNIFTY expiry that just happened. Okay, so before giving you any update on the day and how it went and how I adjusted my position and everything, let me tell you what profit and loss I made today. So in this main account, Jiroda, I made 21k profit, and in my another main account I made 26.5k profit. So altogether 27.5 is what 47.5k profit is what I made in main accounts, and in my small account I made 21k profit. Okay, so that's the summary about the profit and loss that I made. Now coming to the chart, and let me explain you how they went. So initially, to be very honest, for an aggressive trader, means for a straddle seller, it was not at all an adjustment day. Means the way I trade my straddle position. So on that basis, till here there was not, sorry, till this breakout, okay, there was not any adjustment that I should have done अगर मैंने आज straddle play किया होता, and that gave fantastic decay. The straddle which started with 110 points as premium, till here it was running with 60 points. Okay, so it was here till here it was running at 70 points. Okay, यहाँ पे कहीं पे ये 65 पे रन हो रहा था, 65-70 पे ही रन हो रहा था. So all together 40 points of decay one could have captured अगर उसने straddle को थोड़ा aggressively trade किया. And you know that I don't keep SL in my straddle when I trade in straddle. Okay, I play on levels basis. Okay, so my levels has not got broken anywhere, and that is why I'm telling you कि मैं यहाँ तक शायद कोई adjustment नहीं करता. So still I would have gotten a very good decay अगर मैं उस पर किया होता. But things apart, I will talk here what I traded. Okay, so in the very first minute I decided that I will play very conservative. Okay, and अगर आप गौर कर रहे होगे पिछले कुछ एक्सपायरी से मैं बहुत conservative approach रखता हूँ in the very first half an hour. Okay, and slowly and gradually I try to come close in the closest strikes and start trying to play aggressive from there. Okay, so what is the reason behind it? मैं क्यों इस तरीके से play कर रहा हूँ? If you remember my 2 months back expiries, so 3 months back expiries, that time I used to play very aggressive in the first half itself. Reason for that, I always look for a decay in the first 1 hour, 1.5 hour, and on that decay I try to capitalize on it. But right now I have changed my approach completely. Nowadays I start my day by taking position in very risk off approach. Okay, and very risk off strikes, और मैं वहाँ से just wait for some movement to happen. और जैसे वहाँ से कुछ मूवमेंट आता है या थोड़ा आईवी स्पाइक आता है या थोड़ा गामा इफेक्ट आया, then in all these scenario I try to capitalize it. And why I'm doing it? Because if I will continue, see, I know if I will continue doing this, then the first thing that will happen, मेरा जो रिटर्न होगा, it will go down a bit. Okay, there is no doubt in it. Okay, because here I am not capitalizing on the decay that might happen in the first 1 hour. Okay, I'm capitalizing on the movement that is happening. So here my expectation is, and why I am expecting this way, because if you are seeing the last few expiries, okay, last 2-3 months expiries, they are way too volatile. Okay, और इसलिए मैं यहाँ से अपने अप्रोच को चेंज करके instead of collecting the initial decay, I just jumped into this thing कि मैं यहाँ से मेरा ये अप्रोच होगा कि अगर कुछ मूवमेंट आया, उससे आईवी स्पाइक हुआ या फिर थोड़ा भी गामा हुआ, तो मैं उससे कैपिटलाइज करूंगा. ओके, एंड दैट्स हाउ आई विल कंटिन्यू डूइंग फ्रॉम हियर आल्सो टिल द पॉइंट विक्स इज नॉट अबव 14-15. ओके, till VIX is below 14, then I will continue doing this, and after that I might change my approach. So that time I will definitely tell you how I'm proceeding from there. But right now in the given scenario, that is how I am going to proceed. So I started my day today with a very risk of strikes. उसके बाद मैं वेट किया यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, and here I collected some decay in main accounts. I was like 6-7k profit in each account. Okay, but in this up move, okay, it didn't hurt that much, but yeah, 7k profit came down to 4k. Okay, and from there when this down move happened, because this was for me a breakout. Okay, अगर आप देखोगे यहाँ से पहले इसने इस कैंडल पे ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, बट उसके बाद फिर एक सेलिंग आया. उसके बाद इस कैंडल में बायर्स ने प्रूव किया खुद को, एंड व्हेन दिस कैंडल फॉर्म्ड, तो मैंने अपना बायसनेस जो है वो बुलिश कर दिया, एंड राइट इन द नेक्स्ट कैंडल आई गॉट द हिट. ओके, इसके कारण क्या हुआ, मैं जो 7-8 के प्रॉफिट में था पर अकाउंट, वहां से मैं पहले तो यहाँ तक मैं 4-5 पे आया. देन इन दिस डाउन मूव आई केम डाउन टू 2-3 के नेगेटिव. Okay, there I changed my approach completely and I went completely non-directional. Reason for that, what is the reason? So first thing is कि यहाँ पे buyers ने बहुत अच्छा अपने आप को अपने स्ट्रेंथ को दिखाया था, but when these sellers started showing their strength, उसके बाद जब फिर से अप मूव आया, it was crystal clear to me कि आज कुछ वैसा कुछ मूव आने वाला नहीं है, at least till 130 is what I expect, because after 130 you know on expiry anything can happen. Okay, so 130 till 130 my expectation was कि मार्केट साइडवेज रहने वाला है. सो यहाँ तक आप देखोगे तो स्लोली एंड स्टेडी मार्केट इसी रेंज में. आज तो पूरे दिन मार्केट साइडवेज ही रहा, बट
quite volatile. So for a person and for a trader like me who has a very conservative approach, और मैं बहुत छोटे stop loss के साथ काम कर रहा था, तो I got my SL hit everywhere. Okay, and that is the reason till 12. अगर आप यहाँ तक देखोगे, दैट्स वाई ये मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट दिया कि टिल 12 आई वाज सेटिंग विद नो प्रॉफिट एंड नो लॉस. ओके, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट कलेक्ट हुआ था वो यहाँ पे लॉस में कन्वर्ट हो गया, फिर यहाँ तक अपमूव में मैं उस लॉस को कन्वर्ट कर दिया ब्रेक इवन पे. टिल 12 आई वाज सेटिंग ब्रेक इवन. So 100% of the decay that happened in all three accounts, okay, it came after 12. Okay, and that is the reason the second half I expected it to be a bit challenging, but it happened to be very calm one. Okay, और मैं यहाँ पे अपने आप को सेव कर लिया, बट इन अ स्मॉल अकाउंट आई थिंक आई टुक अ हिट. ओके, और लेकिन वो हिट इतना बड़ा नहीं था, छोटा ही था, क्योंकि मैंने फिर से यहाँ पे अपने आप को बाइसेंस थोड़ा अपसाइड किया था, पुट के साइड थोड़ा अग्रेसिव हुआ. देन अगेन द सेम थिंग हैपेंड इन स्मॉल अकाउंट. और मेन अकाउंट्स को मैंने नहीं किया टच. मेन अकाउंट्स में मैं न्यूट्रल ही अपने स्टांस को रखा, बट इन स्मॉल अकाउंट मैं थोड़ा सा बाइसेंस दिखाया, बट दैट हिट मी. और उसके कारण मेरे को 3-4K का, ज़्यादा नहीं 3-4K का लॉस हुआ. अदरवाइज इट वुड हैव बीन अ इजी 25-26 के डे in a small account, but still I'm very happy with the outcome also. Okay, so that's the update about, and that's the summary about how I manage my position and what plan I had throughout the day, and on that basis how I just did my adjustment. Okay, so yeah, I hope everything that I'm telling you, you're learning something from them, and if you do, then please do like, subscribe my channel. Thanks a lot, and bye.